हेलो गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 6 का चैप्टर 2, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्योंकि पहला चैप्टर है, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर नहीं है, ओनली क्यूरियोसिटी इन साइंस जो आपकी नई बुक आई है उसके बारे में बताया गया है, और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे इस बुक्स में वो दिया गया है। तो अपन सबसे पहले दूसरे चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं पीछे वाले उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, here are two types of seeds, what differences do you find among the roots and leaf venetion of their plant। आपको नीचे 2 टाइप के सीड दिए गए हैं। इनकी सीड की जो रूट है, प्लांट की जो रूट है उनमें, और जो लीफ का वेनेशन है, जो लीफ का प्रकार है, उसमें डिफरेंस बताना है। तो रूट की बात करें और लीफ की बात करें तो वीट के अंदर जो पहला बीज वीट का दे रखा है। वीट हैज फाइबर्स रूट। This type of root system consists of many thin branched roots that spread out from the base of the stem। Leaf venation बात करें wheat की तो wheat leaves exhibit parallel venation। In this pattern, the vein run parallel to each other along the length of the leaf। जो सेकंड टाइप के जो बीज हैं वो है किडनी बीन्स के रूट्स। किडनी बीन्स हैव a taproot system। This consists of one main root that grows vertically downward with smaller side roots branching off from it। लीफ वेनेशन की बात करें तो काइंडली बीन लीव्स exhibit reticulate venation। This pattern form a network of veins that branch out from a central midrib and spread across the leaf। रेटिकुलेट वेनेशन इसमें पाया जाता है। सेकंड बात करें क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑफ द सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, राइट द नेम ऑफ aquatic animal in the area marked and terrestrial animal in the area marked B। Enter the name of animals living in the both habits in part C। नीचे आपको एनिमल्स के नाम दिए गए हैं जो पानी में रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं और दोनों जगह रहते हैं, इनका अलग अलग बताना है। और ए बी सी तीनों पार्ट में दिख रखा है। जो एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले हैं, डॉल्फिन और व्हेल। टेरेस्ट्रियल जो जमीन में रहते हैं, हॉर्स है, सीप, स्क्वेरल, पिजन, अर्थवर्म, दोनों जगह रहते हैं, जिसको ब्राफाइट कहते हैं। फ्रॉग है, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस, ये दोनों हैबिट्स में रहते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, मन्नू's फादर कंटेन ए किचन गार्डन। वन डे she was digging out radish from the soil। She told Mannu that radish is a kind of taproot। Examine a radish and write what type of root it is। What type of venation would you observe in the leaves of the radish plant। जो मनु उसकी मदर है, उसने किचन गार्डन के अंदर एक रेडिश है, रेडिश को जमीन से बाहर निकाला, तो इसका जो शेप है और उसकी लीफ का वेनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। A radish is an example of taproot system which is characterized by a main root that grows vertically downward and is larger than the other roots। The type of roots store food and nutrient for the plant। The leaves of the radish plant exhibit reticulate venation। In this type of venation, the vein form a network-like pattern on a leaf with smaller vein branching off from the main vein। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लुक एट द इमेज ऑफ माउंटेन्स, गोट एंड अ गोट फाउंड इन अ प्लेन। पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। व्हाट आर द रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस। माउंटेन गोट और गोट फाउंड इन प्लेन, तो इनके बारे में बात करनी है, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बताना है। बात करते हैं सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन माउंटेन गोट्स एंड प्लेन गोट्स। Species both are goat and belong to the same family, right? Both are the herbivorous and eat plants। Body structure both have hooves and horns। माउंटेन गोट्स और प्लेन गोट्स के अंदर डिफरेंस देखते हैं।
Mountain goats may have thick, long fur to protect against cold mountain temperature. Plain goats have shorter fur suited for the warmer climates. Generally stockier and more muscular, adapted to climbing rocky terrains. The leaner built in is suitable for flat, open areas. Specialized hooves with a rough texture for better grip on rocky surface. Hooves more suited for walking on flat, grassy land. Often have carved sharp horn for defense. Horns can vary but are usually less pronounced than those of mountain goats. Need thick fur and strong muscles to live in cold, rocky mountains, specialized who help in climbing. Live in warmer flat area, so it has shorter fur and body shape, good for walking on grass. 6 number uses the strong built and sharp horn to defend against predator in the mountains. Release relies on being fast and agile to escape from predator on the plain. Next question 5. Group the following animal into two groups based on any features other than discussed in the chapter. Cow, cockroach, pigeon, bat, tortoise, whale, fish, grasshopper, lizard. Terrestrial animal. Those animals are based on their habit. Animals lie on land. Terrestrial and animal that lie in water. टेस्टली बात करें काऊ कॉकरोच पिजन बैट टोटोई ग्रास ओपर लेजार ये एनिमल की टेस्टल एक्विटी की बात करें वेल और फिश है. सिक्स क्वेश्चन है एज ए पॉपुलेशन ग्रो एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइव्स forests are being cut down to meet various needs. How can this affect your surrounding? How do you think we can address this challenge? Answer impact of deforestation, loss of biodiversity. Many species lost their habitat leading to a decrease in biodiversity. Climate change. Trees absorb carbon dioxide, cutting them down increase the concentration of greenhouse gases, contributing to global warming. Soil erosion. Trees help in the holding the soil together. Without them, the soil becomes loose and prone to erosion. Disruption of water cycle. Trees play a significant role in water cycle. Deforestation can lead to changes in rainfall pattern. Loss of livelihood. Many communities depend on the forest for their food. Deforestation can disturb their way of life. Addressing the challenge. Reforestation and afforestation. Planting new trees to replace those that have been cut down. Sustainable logging process. Ensuring that logging isn't done in way does not harm the ecosystem. Protect area establishing more national park and wildlife sanctuaries to protect exhibit forest. Community involvement. Engaging local communities in forest conservation effort. Legislation की बात करें implementing and enforcing laws that prevent illegal logging and deforestation. Education awareness, educating people about the importance of forest and how they can help in the conservation effort. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें analyze the flow chart. What can be examples of and be? Plant do the leaves yes. It has to reticulate when और भी बताना है. The examples of there are plants that have reticulate venation in their leaves. Examples mango, hibiscus, rose. Examples of there these are plants that do not have reticulate venation. They are parallel venation. Maize, wheat, grass. Next बात करें question number 8. Raj argued with his friend Sanjay that the Gudal hibiscus plant is a shrub. What question can Sanjay ask for clarification? Questions that Sanjay can ask for clarification. What is the height of Gudal hibiscus plant?
Serve are typically medium-sized plant. What is the nature of its stem? Serve have hard but not very thick stem. How do the branches of the Gudhal plant appear? Serve typically have branches that rise close to the ground. Is the stem of the Gudhal plant woody? Serve often have woody stem. नेक्स्ट बात करते हैं based on the information in the table, find out examples of these plants for each group. Group A and B, type of seed, dicot, monocot, type of root, taproot or hibiscus root. Examples now. What other similar do plant of group A have? ग्रुप ए की बात करते हैं, डाइकोट, टेपरूट. एग्जाम्पल से मैंगो, रोज, हिबिस्कस. बी की बात करें, मोनोकोट, फाइबर्स रूट. Examples wheat, match, rice. Similarities of plant in group A. What are the similarities of plant of group B? The plants in group A, dicot, typically have leaves with reticular venation. Similarities of plants group B. Plant in group B, monocot, generally have leaves with a parallel venation. Observe the level part of a duck in the picture given below. What differences do you observe in the feet of the duck compared to the other bird? Which activity would the duck be able to perform using? डक और पिजन दे रखे हैं और इनकी जो फीट है उनके आधार पर इसका आंसर देना है. Differences in the feet. Duck has a webbed feet. Pigeon does not have the webbed feet. Has regular bird feet with separate toes. These are the क्वेश्चन आर completed. तो अपने चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.